Subject होची तमरा fundamentals of electrical and electronics engineering. In that हमें chapter number 4 that is electric and magnetic circuit विषय में पढ़िबा. So एटा तमरा lecture number 1 रहिबो. So next class रे हमें आउ ताकू details further continue करिया. Okay. Introduction to electric circuit. So electric circuit विषय में details पढ़िबा. So एटा ଗୋଟେ simple diagram एबे देखि पारियो ଗୋଟେ electric circuit रो ଗୋଟେ simple ଗୋଟେ bulb लागिची and ଗୋଟେ switch connect अछि and एडी हम ଗୋଟେ supply जेतला हम दबा switch जेतला हम on करिबा then ए light टा glow करिबो ଗୋଟେ simple circuit अछि simple circuit. So this is all about me. So next. So topics to be covered. कौन topics हमें आज cover करिया. Okay, so topics गुडा रहइबो तमरा topics रहइबो तमरा फर्स्ट रहइबो हमर parameters of an electric circuit. Electric circuit रे कौन सब parameters अछि. Then each parameter विषय हमें details पढ़िबा. What is current, voltage, power and energy. Then electric circuit रे किछि terminology बा किछि important points गुडा analysis करिबा. Then later on हमें circuits laws जिनकी तमरा KVL और KCL Kirchhoff's voltage law, Kirchhoff's current law, and lastly we'll solve some simple numerical problems. Okay, so at the end of this class हमें कौन सब learn करि परिबो से विषय बिटिके briefly हमें discussion करिबा. So students will be able to understand and define essential electrical parameters such as voltage, current, resistance, power, energy, and explain their significance in circuit analysis. So students कौन learn करि परिबो the electrical parameters in voltage कौन, current कौन, तार definition, तार unit, okay, तार formula and ताकू किनी analysis करि परिबो. Then कौन learn करि परिबो students will gain familiarities with fundamental electrical concepts including nodes कौन, branches कौन, loops, mesh and apply them in analyzing electrical circuit. So एगुडा को किछि concept गुडा को learn करि परिबो ता सहित ए concept ता को से circuit को analysis रे भी use करि परिबो. Then a student will develop the ability to apply Ohm's law. Ohm's law use करि परिबो. Ohm's law विषय रे बुझिला पर Ohm's law को apply करिबा ओडा circuit रे analysis करिया पई KVL KCL to solve basic numerical problems related to series, parallel and combination circuits. So हमर जहाँ भी learning रहिबो जहाँ भी हमर classes रहिबो से सब जा outcome based learning, so that after completion of one lecture by one video by one lecture complete कला पर तमे कोन सिखिबो learn करिया दरकार. So तमर first thing objective कोन जानिबा दरकार. So video रे कोन तमे learn करिवो then हमें further continue करिवा. At the end रे हम देखिबा जे ए सब बुझा तमे learn करलो कि नाही सेडा भी हमें analysis करि परिबा. Right. So next होची students will be able to analyze and predict the behavior of simple resistive circuit. ଗୋଟେ simple circuit रो तार behavior भी हमें study करि परिबा. Behavior in the sense कोन से circuit ता केते power consume करिवो और तार output रे केते power आसीबो ए सब analysis हमें करि परिबा. Understanding current voltage distribution in series and parallel networks. So the series circuit and parallel circuit तार voltage distribution, current distribution से बेसिक details analysis करि परिबो. So these are our objectives. ए सब हमें learn करिबा. Although ए जगह रे बहुत सारा जिंस तुमको तमे जानि नथिबो से बेसिक भी हमें details पढिबा जेन कि तमरा वे सिंपल मे भी voltage current जानथियो किंतु तमे नोट्स हेला तापर KVL KCL यूज किन करियार से सब जा मे भी जान नथियो किंतु ताको हमें details in depth analysis करिबा. Okay, so then before that हमें जानिबा जे इलेक्ट्रिक सर्किट विषय हमें पढ़े पूर्व इलेक्ट्रिक सर्किट रो इंपोर्टेंस कोन. ओके, इंपोर्टेंस कोन इन द सेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी हमर कोड यूज हो जाऊ केते एफिशिएंटली हमें ताको यूज करछे एंड केते इजी लाइफ केते इजी हे परछि ता देखो. ओके, देखो हमें सिंपल उडे एग्जांपल म एड बहुत सारा एग्जांपल दैछि एंड डायग्राम भी अछि देखि पारिबो. सो उडे मिक्सचर और ग्राइंडर इजीली हमें हमर कोन चाउल हेला बा सिंपल जिंस हमें जहाँ भी ग्राइंड कर पाचे बा पाउडर कर पाचे इजीली हमें ग्राइंड कर पाचे. प्रीवियसली किंतु हमें कोन करथले उडे जो पत्थर थ्रू रे हमें चक्की थ्रू रे हमें ताको पेसिगिरी कोन ताको ग्राइंडिंग करथले. सो वेयर एज
इजिली गोटे मिक्सचर और ग्राइंडर आम गोटे कौन कर सिंपल आम जूस कर इजिली आम जहाँ भी विदिन फ्यू मिनिट्स रे भी इजिली कर एंड परिश्रम भी किसी करिया पड़े जस्ट स्विच ऑन कले चलला देन आम गोटे आयरन बॉक्स देखिपर गोटे आयरन रे इजिली आम आयरन करिया द्वारा जहाँ आम इजिली लुगापटा को आम क्लीन तो नुह ताको आम सेफ प्रॉपर्ली आम रखिपर देन ये गोटे देखिपर तुम वाशिंग मशीन सो इजिली वाशिंग मशीन रे तुम लुगा सफा कर सो ये सब जहाँ भी एग्जांपल्स दिखाई ये सब जगह इलेक्ट्रिक करंट बा इलेक्ट्रिकली एनर्जी यूज अच्छी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज अच्छी सिंपल आम गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब आम एग्जांपल नहीं पारिबा अदरवाइज आम राति बहुत सारा कौन आम निहती अंधारिया ही होता आम किसी भी कम कर पारे ओनली सूर्य जो दिन में ही कम कर पारे राति बिल्कुल किसी आम कम कर कहीं अंधारिया दस्ता तो कौन कम कर ओके एंड गोटे सिंपल गोटे देखिपारे गोटे इंडस्ट्री देखिपर आमर कोल इंडस्ट्री ना पैकेजिंग इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री प्रोडक्शन इंडस्ट्री स्टील कंपनी से सब जगह मिलिंग ग्राइंडिंग जहाँ भी मेसीन गुड़ाक सब जगह आम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होच एंड गोटे छोट एग्जांपल आम नहीं पारिबा आम गोटे घरे मनर गोटे रूम आम स्टडी रूम रे पढ़ुचे सो गोटे सिंपल लाइट यूज करते एंड एबे तमे जे तुम मोबाइल रे देखि परजो बा मु लैपटॉप रे मोर पढ़ुची सो सेडी आम इलेक्ट्रिकल एनर्जी आम यूज करछे सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर ट्रांसफरिंग एंड कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के आम गोटे जगार आम पावर प्लांट रे आम जनरेट करवा जनरेट करी ओवर द वायर मीडियम रे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट करि पारिबा ता सहित आम कंट्रोल भी करछे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आम इजिली कंट्रोल करि पारिबा बाय चेंजिंग इट्स वैल्यू सच एज वोल्टेज करंट ए सब आम चेंजेस करि पारिबा ओके फ्रॉम हाउस होल्ड एप्लियंस सो ये जोड़ा रहिला तम मिक्सचर हेला ग्राइंडर आयरन उडे एंड बल्ब फैन ओके फैन हीटर एसी तापर हमर रेफ्रिजरेटर फ्रिज जोड़ा कहछ तमे से सब जगह हमर इलेक्ट्रिकल एप्लियंस हेला इंडस्ट्रियल मशीनरी बहुत सारा मोटर एंड तमर ड्रिलिंग मशीन ए सब जगह तमर यूज होची इंडस्ट्री उडा यूज हे पाछ दे एनेबल द डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सो बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिन तमर मोबाइल फोन लैपटॉप टीवी रेडियो ए सब जगह एंड तमर कम्युनिकेशन सिस्टम जिन मोबाइल फोन हेला ऑटोमेशन सिस्टम ऑटोमेटिक बहुत सारा रोबोटिक सिस्टम ये सब जगह हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होच एंड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्रूशियल फॉर डायग्नोस्टिक्स मेंटेनेंस एंड एफिशिएंट पावर मैनेजमेंट मेकिंग देम foundational in electrical and electronics engineering so electrical behavior electrical concept learn करिया द्वारा कोन हबो तमरा एडा फाउंडेशन कोर्स हे दियो तमरा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ता से तमरा बेसिक फंडामेंटल इन इनिशियल बेसिक कोर्स स्टार्टिंग रे तमरा कॉमन सब्जेक्ट एडा रहइबो फर्स्ट ईयर इन योर डिप्लोमा और इंजीनियरिंग कोर्स रे एडा तमरा बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रहइबो ही रहइबो ओके फंडामेंटल कांसेप्ट बुझी पारि बुझीला सो देन इलेक्ट्रिक सर्किट गोटे सिंपल सर्किट तो प्रीवियसली ऑलरेडी मु देखिए गोटे सिंपल सर्किट देखो सिंपल सर्किट आम ऑलरेडी फास्ट रे तमर अच्छी सिंपल सर्किट देख ओके एटा मु सिंपल सर्किट देखी ऑलरेडी सो ये जगह आम इलेक्ट्रिक सप्लाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज किसी प्रोवाइड करवा एंड गोटे बल्ब रहा एंड आ थ्रू रे करंट फ्लो हम एंड स्विच तमर ऑन कले ही आ थ्रू रे करंट फ्लो हो पारिबो सो दैट दिस इलेक्ट्रिक बल्ब विल ग्लो एटा बल्ब दा ग्लो हबो सो इलेक्ट्रिक सर्किट रो किछि पैरामीटर्स अछि एंड किछि की पैरामीटर्स डा विषय में डिटेल्स एनालिसिस करबा सो डिटेल किछि पैरामीटर्स अछि जेन कि तमरा इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी सो गोटे सिंपल बैटरी एग्जांपल नै देखि परिबो सो गोटे सिंपल बैटरी हम इलेक्ट्रिकल करंट बा वोल्टेज हम सप्लाई इजीली पाई परिबा व्हाइल तमरा एसी सप्लाई भी हम इजीली पाई परिबा जेन कि तमरा एबे 3 पिन सॉकेट हेला सो इजीली हमें सेडा में इलेक्ट्रिक बल्ब हेला बा इलेक्ट्रिक फैन हेला ताको हम यूज करि परिबा सो दैट इज योर सप्लाई करंट बा सप्लाई वोल्टेज एंड वंस हमें एबे गोटे एग्जांपल एटा बल्ब होइछि ओके बा लैंप सो गोटे बल्ब हेला बड़ा लैंप हेला नल द गोटे हीटर मोटर ओके मोबाइल फोन ये सब जगह हमर हेला कोन ना लोड कहबा हम ताको हमें लोड कहबा सो व्हाट इज लोड एंड व्हाट इज सोर्स सो सोर्स कोन आ लोड कोन सोर्स होछि तमरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जगह में पाउचे दैट इज योर
सोर्स इलेक्ट्रिक सोर्स जनरली ब्रॉडली आम जदि कहबा व्हाट इज सोर्स जो जगार आम एनर्जी मिलूची दैट इज कॉल्ड योर सोर्स एग्जांपल है कोल सन विंड ओशन एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी बायोमास ए सब जगह सोर्स ऑफ एनर्जी व्हाइल इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी आम जदि कहबा मे बी ए वोल्टेज सोर्स और मे बी ए करंट सोर्स कहबा आम डिटेल्स सो ता विषय आम डिटेल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स लाइक योर आइडियल सोर्स practical source and dependent source independent source से विषय में डिटेल्स पढ़िबा इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट चैप्टर में डिटेल्स ता विषय डिस्कशन करबा व्हाइल व्हाट इज अ लोड लोड कोन लोड होची जा को तमरो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर अछि जे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन करबा दैट इज योर लोड एग्जांपल है लैंप फैन हीटर मोटर जहां भी हमें घरे यूज करछे और इंडस्ट्री रे यूज अछि दोज आर योर लोड्स so then हमें in details हमें different types of parameters sorry different parameters विषय तारा definition तारा units and तारा symbols and तारा formula विषय हमें details पढ़िबा so what is current so current पढ़े पूर्वरु हमें जानिबा जे गोटे पार्टिकल और गोटे सिंपल हमर एलिमेंट्स रो कंस्ट्रक्शन विषय वेरी सिंपल ब्रीफली गोटे विदिन मिनिट्स विषय में मिनिट रे कहि दो देखो गोटे पार्टिकल रो छोटो टाइनी एलिमेंट को आम कहि पारबा गोटे एटम कहबा ओके एटम कहबा छोट सब छोट जिंस होची एटम इनसाइड द एटम एटम भितर तमर न्यूक्लियस अछि न्यूक्लियस भितर तमर कोन रहउची ना न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस भितर तमर कोन अछि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर देयर एंड सराउंडिंग some electrons are moving okay electrons are moving electrons guda surrounding re move करछि so electrons are moving तमे केमिस्ट्री रे आर कंस्ट्रक्शन एंड केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल बिहेवियर से विषय तमे डिटेल्स तमे पढिबो फॉर ना हम सिंपल जानि परिबा जे माने एडे जानिया पड़िबो जे तमको गोटे छोट पार्टिकल लाउची तमर एटम रे तमर न्यूक्लियस अछि न्यूक्लियस भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड बाहर तमर इलेक्ट्रॉन्स अछि एटी जानिबा दरकार देन हमें डिस्कशन करिया जे व्हाट इज द चार्ज कोन so charge okay so electrons and protons are charge carrier when a charge of q amount q is manor charge in coulomb so से विषय तुम ऑलरेडी क्लास 10th रे भी बा फिजिक्स रे भी तुम ऑलरेडी पढ़ी छ चार्ज विषय रे चार्ज होची तमरा चार्ज का मैं q रे डिनोट करबा एंड तारा यूनिट होची coulomb and electrons having positive negative charge carrier 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb ए विषय तमे क्लास 9 10th रे निहाते पढिछ सिमिलरली प्रोटॉन रे भी सिंधी पॉजिटिव चार्ज हबो इलेक्ट्रॉन्स हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज सो coulomb हेला तमरो चार्ज रे यूनिट एंड इट इज डिनोटेड बाय q सो व्हाट इज करंट सो सिंपल तमे जाने छ ऑलरेडी the flow of current केतला possible when the flow of charge is possible जेतला flow of charge को मनरा q is a charge from point a to point b from point a to point b को जदि हम ओडे चार्ज को मूव करेबा देन हम ता कहबा flow of current is possible so simple definition तमे क्लास रे भी पढी छ जे flow of electron or flow of charge is called electric current so exact jodi tara definition dekhiba what is the definition kochi the electric current is defined as the time rate of change of the charged particles flowing through a predetermined area so kon kochi definition of current says that I equal to dq by dt where dq is the rate of charge change in charge by change in time so गोटे चार्ज ला q चार्ज गोटे पॉइंट रो आ गोटे पॉइंट को जला मूव होची माने विथ रेस्पेक्ट टू टाइम रे से चार्ज ला कोन गोटे जगह आ गोटे पॉइंट को मूव होची सो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम रे किछि समय लागियो ना नहीं मूव होबा पे सो टाइम लागियो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट गोटे चार्ज को गोटे पॉइंट रो गोटे पॉइंट को जतरा मूव करेबा सेडी हम कहबा जे करंट फ्लो हलाली कहबा
So एडी मोड सिंपल फिजिकल एग्जांपल देबी सो दैट ता विषय तमे आउट डिटेल्स बुझी पारियो जे फ्लो ऑफ करंट कोन सला सो सिंपल आम कौन करवा दीटा वाटर टैंक एग्जांपल ना ऑलवेज विल कंपेयर द करंट फ्लो विथ वाटर फ्लो से आम करंट फ्लो सब एनालिसिस करि परिबा सो एग्जांपल मु कौन करछि गोटे दीटा वाटर टैंक नै टैंक ए एंड टैंक बी सो टैंक ए रे सपोज वाटर लेवल एति अछि एंड टैंक बी रे वाटर लेवल मनर एति अछि सो टिके कम अछि टैंक बी रे सो कौन करवा मैं गोटे पाइप ओके गोटे पाइप टे कनेक्ट करवा जगह रे गोटे पाइप कनेक्ट कले सो इजीली वाटर विल फ्लो फ्रॉम टैंक ए टू टैंक बी ए टू बी फ्लो सो तार रीजन कोन ना रीजन भी बहुत सिंपल तुम जानि छ ऑलरेडी वाटर कोन हबो ना सब हायर लेवल रू हायर लेवल रू लो लेवल को वाटर सिनी फ्लो हो दैट इज व्हाई तम जो वाटर टैंक गुडा जो हमर सिटी एरिया रे बा जो जगह भी वाटर टैंक बा ठीक अछि पानी टांकी जोडी कराई दाउची देखि पाथियो बहुत हाइट रे वाटर टैंक कराई दाउची ना नहीं बहुत हाइट रे वाटर टैंक करा होची सो दैट वाटर लेवल हाई रहइबो इजीली फ्लो होई पारियो बुझियला सिमिलरली फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट so current रे unit अछि ampere okay its SI unit is ampere it is denoted by a होछि ampere amp भी लिखि पारिया amp amps so for example 5 ampere 30 ampere okay आ किछि छोट वैल्यू जदि नबा 0.2 ampere बहुत स्मॉल वैल्यू बा हायर वैल्यू जदि नबा 10 किलो ampere so large value को किलो नै परिया okay so types what are the types of current so types of currents are two types one is DC and AC alternating current and direct current so direct current are available in our battery तमे जो supply पाउचो that is a direct current while आमे जहा यूज करते घरे फैन रे लाइट रे हीटर रे मोटर रे that is your AC supply alternating current okay alternating current and DC direct current so the graph देखिबा जदी फिगर देखिबा so direct current कोन with respect to time रे these values are fixed value that is a constant value okay constant value so flows in one direction whether positive or negative direction only one direction and magnitude remain constant magnitude in the sense value graph देखिपाछे सब value डा कोन constant throughout the time period the value is constant that is called DC direct current then alternating current AC current so changes direction periodically so it changes its direction periodically as well as its magnitude also changes with respect to time देखि पारियो magnitude गुडा को change होचे magnitude माने for example मोहैबी 5 newton force equal to 5 newton this 5 number is called magnitude or amplitude so magnitude or amplitude changes periodically as well as तमरा direction भी change होचे further in details हमें next chapter रे एसी थ्योरी विषय में डिटेल्स पढ़िबा एनालिसिस करिबा फॉर नाउ खाली जानि थो जे एसी डीसी दीटा टाइप रो तमरा सप्लाई अछि देन व्हाट इज वोल्टेज सो वोल्टेज इज प्रीवियसली जिन के हम देखिले ऑलरेडी वाटर टैंक रो डिफरेंट लेवल जगु तमरा वाटर फ्लो ला गोटे पॉइंट रो गोटे पॉइंट को सिमिलरली गोटे इलेक्ट्रिक सर्किट रे सिंपलेस्ट सर्किट कैन बी a simple electrical bulb नबा and ताको हम गोटे simple electric supply दे देबा then this is a simple diagram for electric circuit so electric circuit through रे जतला current flow हो in that the appliance will work about मनर lamp टाइम जदी नै छै सेडा ग्लो करिवो lamp टा तमरा ग्लो करिवो बुझियला so एडी कोन करिवा ना positive potential and negative potential in the sense गोटे हायर लेवल गोटे लोअर लेवल डिजाइन करिवा सो दैट current will flow from higher level to lower level okay so this is called your voltage एडा होची voltage so previously already मैं कहली कोन जे गोटे चार्ज को q charge from point A to point B q charge from point A to point B को जतला में मूव करेबा बा ट्रांसफर करेबा in that case we'll say that
the flow of current is possible. बुझीला सो चार्ज को जदि गोटे पॉइंट रु आ गोटे पॉइंट को मूव करिया पय ऑब्वियसली किछि वर्क डन करिया को पड़िबो एबे मन तमे गोटे जगह रा आउट जियाउ और आउट जगह जदि जिया पड़ियो जीवो बोली कहले निहाती किछि गोटे काम करिया पड़ियो ना नहीं ना खाली पळेयो जाई परियो जाई परियो गोटे गाड़ी की व्हीकल गोटे जगह आउट जाउ जदि हमें गाड़ी चलै नबा कहले निहाती हमु कोन किछि वर्क डन करिया पड़ियो दैट वर्क डन इज कॉल्ड वोल्टेज ओके ए जगह गाड़ी रो वर्क डन को वोल्टेज करियानी हमरो चार्ज को गोटे पॉइंट रो आउट पॉइंट को मूव करा पय जो किछि वर्क डन करिया पड़ियो दैट इज कॉल्ड वर्क डन माने वोल्टेज दैट इज कॉल्ड योर वोल्टेज सो द चार्ज moving an electric current give rise to current moving an electric circuit और चार्ज को मूव करले then current flow ले हम कहबा for a charge to be moved say from point A to point B को जे में उडे चार्ज को मूव करबा उडे सर्किट रे some work or some energy has to be expanded किछि वर्क करिया पड़ेबा किछि एनर्जी निहाती यूज करले ही गोटे पॉइंट रो आउट पॉइंट को move habo so the work done in moving a unit charge from point A to point B is called voltage and it is denoted by V वो unit होची volts unit होची तारो volts बुझियला so V equal to okay small v equal to dW by dq by dq is called your voltage dW by dq हेला वोल्टेज गोटे क्यू चार्ज को गोटे पॉइंट रो आउट पॉइंट को मूव करले केते तमरा वर्क करिया को पड़िबो दैट इज कॉल्ड वोल्टेज और यू कैन से द ड्राइविंग फोर्स टू द करंट गोटे करंट दा ड्राइव फ्लो होची सो ताको पुश करची गोटे प्रकार वोल्टेज ता तमे कहि पारिबो सो करंट वोल्टेज बुझियला देन हमें ओम्स लॉ विषय में टिके ब्रीफली देखिबा व्हाट इज ओम्स लॉ क्लास 8 9 10 रे भी तमे ओम्स लॉ विषय पढिथिबो सो ओम्स लॉ कोन कहूची ना गोटे कंडक्टर रे इन कंडक्टर रे व्हाट इज कंडक्टर मींस होची कंडक्टर मींस जाई रे इजीली करंट फ्लो हे पारिबो फॉर एग्जांपल आयरन कॉपर सिल्वर एल्युमिनियम से जा सब हमें कंडक्टर कहबा जोडा रे इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हे पारिबो ह्यूमन बॉडी इज आल्सो ए गुड कंडक्टर so that's why हम इलेक्ट्रिक शॉक मारछन नै सो सेरा इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहि परिया सो कंडक्टर रे करंट केतळ फ्लो होबे इलेक्ट्रिक वोल्टेज सप्लाई देले करंट फ्लो होबो इलेक्ट्रिक करंट दिस करंट मे बी और दिस इलेक्ट्रिक सप्लाई मे बी AC voltage or DC voltage this small positive negative indicates this is DC supply so AC supply विषय में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कशन करबा फॉर नाउ आई मीन DC विषय ही डिस्कशन करबा सो इन a conductor ohms law विषय में कहूछ in a conductor the flow of current is directly proportional to the voltage ऊपर डिपेंड करछि तमरा करंट so V is proportional to I it's meaning that it means this current depends on the level of voltage जते बढ़िबो current सते बढ़िबो so V proportional to I in a conductor the flow of current is directly proportional to the voltage or potential difference applied between the two points dita point bhitere ame voltage etla apply kale ta saita directly proportional raheba current so V proportional to I so V equal to I into R where R is called proportionality constant known as resistance any type of mathematical equation को सबोले हमें इक्वेट करिया को पड़िबो इक्वल करिया को पड़िबो ओटा प्रोपोर्शनल को हमें एनालिसिस कर परिबा नहीं इक्वल कल ही एनालिसिस कर परिबा सो V equal to I into R where R is known as proportionality constant called resistance called your resistance okay so Ohm's law that is V proportional to I V equal to I into R so from this simple formula we can also find out I equal to V by R and also R equal to V by I okay so current voltage Ohm's law then what is power so power is defined as the work done per unit time unit time ne kette work done hela okay work done that is called power
either generated or dissipated, either power को generate करा ना power को use करा electric power जिनके generator रे और तमरा power plant रे electric power generate करा होची while dissipated हमें घर हेला industry हेला school office building सब जगह में power को dissipate करचे माने consume करचे और use करचे. So power definition is power P equal to dW by dt. Rate of doing work is called power. Rate of doing work कितने टाइम रे कितने काम होला पावर होला. ओके सो ए जगह रे पावर हमें यदि फार्मूला भी इजीली हमें डेराइव करबा सो वी कैन राइट डाउन दिस लाइक दिस. एटा हमें को टाइप रे हमें लिखिबा हम लिखिबा ताको dq by okay so dq by dt into हमें लिखि परिबा और हमें एटा को लिखिबा dw by dq into dq by dt. So एटा इजीली हमें एवडा लिखि पारे नो प्रॉब्लम. सो आउट सिंपल एग्जांपल म को देखो फॉर एग्जांपल a by b को मु एवडा लिखि पारे कोन लिखि पारी a by c into c by b किछि प्रॉब्लम नाही इन लिखि पारी. सो दैट c कैंसिल हो a by b आसीबो से कैंसिल करिया ने c कैंसिल करता a by b आसीयो ना सो हम किछि आउ यूज हबन. So a by b can be written like this. एवडा में लिखि पारिया. Similarly, I have written dw by dt as dw by dq into dq by dt. So लिखि पारिया so that dq कटि जिवो dw by dt ही रहिबो. So while एडी हमें यूज करबा dw by dq is voltage into dq by dt होची current. dq by dt is current. So this one is your voltage and this one is your current. So P equal to V into I formula की नासला गानी पर लो. So this is the formula for P equal to V into I. P equal to V into I. ए जगह रे आउ किछ हमें ओम्स लॉ को यूज करी भी लिखि पारिया. So ओम्स लॉ रू हमें जाने जे V equal to I into R. So I into R into I will give you I square into R. I square R. Similarly V as it is V into I जगह रे भी लिखि पारिया V by R लिखि पारिबा. I जगह मु लिखि पारी V by R लिखि पारिबे I जगह रे V by R लिखि. So this will give you V square by R. So three formulas for power. One is your V into I, I square R and V square by R. Depending upon the variables given को जगह को value देछि ताकू धरी हमें power calculation करिबा. Okay. So तीनटा सिंपल फार्मूला रहइबा फॉर पावर. नेक्स्ट पावर यूनिट होची वाट. WTT पावर यूनिट होची वाट. Okay, so then a definition for electric energy. So electrical energy is the energy generated or consumed or dissipated by the movement of electric charge. Today electric charge gote point ro point ko move kale tamara current flow hochi and due to that tamara electrical energy consumption hey pachi. Typically within a circuit bhitar hame electrical energy ko hame use kariya. So that taku kaya hame electrical energy use hala and electrical energy is converted into some other form like in your light light रे bulb रे electrical energy convert into light and iron रे heater रे हमर electrical light converted into heat. Similarly तमर बहुत सारा जहां भी हमें यूज करबा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जगह सेडी कन्वर्ट होची एंड गुडे टीवी जदी नबा हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू सम इंफॉर्मेशन और डिस्प्ले स्क्रीन रे कन्वर्ट होला. फैन जदी हमें कहबा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू some kind of mechanical energy, rotational energy. So energy can neither be created nor be destroyed. It can only transfer from one form to another form. That is called conservation of energy. Conservation of energy को होची. So energy रा
गोटे फॉर्म रे आउट फॉर्म को एनर्जी ट्रांसफर होची एंड एनर्जी रे यूनिट हेला जूल बा किलोवाट आवर सो एनर्जी ई इक्वल टू पावर इनटू टाइम पीटी ई इक्वल टू पीटी एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम सो गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब किसी समय पे हमें निहाती यूज करिया जदि स्विच ऑन करी ऑफ कले भी किसी भी मिली सेकेंड बा माइक्रो सेकेंड भी कंज्यूम पावर यूज हला सो पावर इनटू टाइम विल गिव यू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सो पावर यूनिट हम प्रीवियसली देखले दैट इज वाट बा किलोवाट हायर वैल्यू का में किलोवाट बा वाट नै परिबा इनटू टाइम टाइम कोन आवर सो किलोवाट आवर हेला यूनिट फॉर एनर्जी यूनिट होची एनर्जी रे यूनिट होची किलोवाट आवर so 1 kilowatt hour is called 1 unit of electric energy so energy bill बा पावर बिल हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिल जेतला आसुची हम यूनिट ताकू पेमेंट करछ ना सो एनर्जी मीटर रे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजरमेंट कराउछ वोल्टेज वोल्ट मीटर रे वोल्टेज मेजर कराउछ एंड तमरा एमीटर रे करंट मेजर कराउछ एंड पावर को मेजर करबा हम वाट मीटर रे एनर्जी की मेजर करबा एनर्जी मीटर रे देन इलेक्ट्रिक सर्किट components what are the electric circuits component in the electric circuit रे कौन कौन सब component रहेगा so components can be resistor what is resistor resistance by resistor is a property where the current can be limited current can be limits so it opposes the flow of current definition for resistance is which opposes the flow of current is called resistance resistance which opposes the flow of current resistance हमें कहि पारिया राइट सो रेजिस्टेंस गोटे देखि पारियो रेजिस्टेंस देखियो कि एबडा रेजिस्टेंस एंड तार डिफरेंट साइज डिफरेंट शेप रे भी रेजिस्टेंस अछि एंड तार रेजिस्टेंस जदि हम सिंबल देखिबा दिस इज अ सिंबल फॉर रेजिस्टेंस इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R and its unit is ohm then capacitor and inductor these are storage elements so the capacitor तमे already देखिछो एबडा छोटा capacitor and तमे fan रे भी तमे capacitor देखिथिबो so that is your capacitor inductor कोन inductor is also a storage element so the coil बा transformer जो coil अछि नल तमे induction heater देखिछो heater भीतर जो coil अछि even हम जो iron अछि इलेक्ट्रिक आयरन ना ता भीतर जो कॉइल अछि दैट कॉइल इज द इंडक्टर ता अछि कॉइल द इंडक्टर इंडक्शन हीटर हेला सर जो फैन भीतर अछि सेटा भी तो हे दैट इज आल्सो इंडक्टर फैन भीतर जोड़ा अछि दैट इज आल्सो इंडक्टर ओके एनी टाइप ऑफ कॉइल आर कॉल्ड इंडक्टर एंड व्हाइल रेजिस्टेंस भी तमे जानि छ को जगह रे इलेक्ट्रिक बल्ब देखि छ inside the electric bulb there is some filaments kind of filament this filament is called resistance that filament is made of tungsten material kind of tungsten रा melting point high so से जो filament देखुछ सेडा हो지 तमरो रेजिस्टर आउ को जगह रेजिस्टर देखिबो तम जो हीटर देखिछ हीटर इंडक्शन हीटर न जो हीटर उडा बड़ हीटर जा देखिते एबडा काइन इन कॉइल उडा इन थिबो देखो so that heater is called that heater coil is a resistor okay resistor सब जगह रहइबो resistor is essential so then I'm a connection of series and parallel connections देखिबा resistance रा combination बेस रा analysis करिबा connections are of mainly two types a series connection and a parallel connection series and parallel connection series connection and parallel connection series and parallel so resistance when resistance are connected end to end is called series connection like this so resistance R1 R2 R3 up to your n number of resistors are there and connected to a supply battery so that there will be flow of current flow of so voltage V voltage positive negative resistance values are R1 R2 R3 Rn
whenever the flow of current remains same throughout the circuit, that is called series connection. In this connection, throughout the circuit, the same amount of current flows. Current is the same rochi. That connection is called series connection. Bujhiyala? Okay. So here you can calculate the equivalent resistance or effective resistance by total resistance. REQ, R equivalent. Total resistance can be found out simply by adding all the resistors value. R1, R2, R3 सब resistor का मैं add कर दबा. Addition कर ले will get the total value R equivalent. So n number of resistors are there. Simply will sum कर दा मिसे दले total resistance value as you. For example, 2 ohm and 3 ohm are connected in series. So total resistance is 2 plus 3, 5 ohm. Okay, here the current remains same. Current does not change. Current does not change. No change in current. Current does not change. Current किसी changes हबो नहीं. While voltage changes, the total voltage it divides into multiple voltages like V1, V2, V3. Previously, just ohms law हमें already discussion करथले जे जदि उडे resistor, if there is a resistance having R ohm and current I ampere is flowing, then in that resistance some voltage drop will appear. That voltage drop as per your Ohm's law V equal to I into R. Current into resistance is called voltage. So in this resistor the voltage will be I into R. Similarly, V1, V2, V3 up to Vn easily हमें बाहर कर पारिया. So total voltage V equal to V1 plus V2 plus V3 plus एवढा समोर तमरा up to Vn. N number of resistor जेतु connect ची, so एवढा हमें लिख पारिया. That is I into R1 plus I into R2 plus I into R3. Individual resistance value into current is called voltage. Okay. Vn दा लिखिए हमें कौन I into Rn. Okay, I into Rn. Here is अगर हमें यदि I को common कर दबा, in that case by taking common as I यदि हमें common दबा will get R1, R2, R3. एवढा रहेगा up to your Rn. Okay, V equal to asla. So that means V equal to I into A sabuja kono R1, R2, R3 equivalent resistance. So R equivalent. V equal to I into R equivalent. And in this circuit, resistance circuit, series circuit, I equal to V by, instead of I equal to V by R diagram में लिखिए R equivalent. So that means here the voltage divides. voltage टा को divide हो जाउची, बहुत सारा voltage रे convert हो जाउची और split हो जाउची, while current remains same. resistance रो combination हो पारिबा एबडा equivalent resistance एडा थला तमारो series connection. Okay, then parallel connection विषय में discussion करिबा. In parallel connection you can say end on end connection. This is end to end connection, END, and to end to end कौन? This एड होची resistance 1, resistance 2, resistance 3. So resistance 1 जोड़ी सल्ला तार end टा out end connect ची एवढा connect ची ना नहीं. So starting end connected to ending point, ending again देखिए मेरा last resistor ending point again connected to starting point of the resistor. एडा है तमरा end to end connection. गोटे end out end connect है जाइछ. This is called series connection. While parallel connection is called end on end connection. end on end connection. That means there is two ends. Dita end monar achi bada. Okay, and 1 and 2. Okay, point 1, point 2. Dita end with रही resistor उड़ा को बहुत सारे resistor में connect कर दबा. That is called your parallel connection. Dita end monar एवढा ची, dita line अच्छी. Two end but 2 points are there and resistance are connected like this. This is called
end on end connection. Starting point would have connect ending point would have connect. This is called parallel connection. And supply voltage dele ta through re current flow habo. Total current divides into different current. Total current jaha flow habo सब different current ready divide. So here current divides while voltage remains same throughout the points. These points, all these points are same. All these points, suppose this point A and point B, point A, point B, point C, point D, point E, point F, all these points are point X, point Y, all these points A, B, C, D, E, F, X, Y. All these points are having same voltage level, that is V. सब जार voltage same रहिबा, that is your parallel connection. Parallel connection रू जानिबो केमिति current जदि change हे जाउजी, that is your parallel connection. Current जदि change होउनी, that is your series connection. In parallel connection, current changes, while in series connection, current does not changes. And in series, voltage changes, while in parallel, voltage remains same. And equivalent resistance can be calculated in parallel connection. 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by Rn. Okay, एवढा इन चलियो. Okay, dot dot पके दो चली. बहुत सारे resistance इंडी रहियो. Equivalent resistance easily calculate करी पारे एवढा. For simplification, we'll take two number of resistance and we will see what is its formula for two number of resistance. If we have two number of resistance, then resistance, equivalent resistance can be found out easily by taking its LCM and equating it. कौन करिया? R1 R2 रे LCM काढिबो, R1 R2 रे LCM आसीबो, R1 into R2 and आमे को LCM बाहर करिवि 1 by R equivalent equal to हमर दीडा रेजिस्टर मनर अछि ताको हमें बाहर करिबा हम कोन पैरेलल रे केते आछि. सो R1 plus R2, सो ऊपर हमर केते रहइबो R2 plus R1. So this is equal to आपको हमें we are interested to find out what is the value of equivalent resistance R equivalent. So R equivalent is its reciprocal. Again आपको हमें reciprocal कर दबा so that R1 into R2 by R1 plus R2 as well. For two number of resistors when they are connected in a parallel, we don't use R1 by R1, 1 by R2 is Parivan. In that case, we will use R1 into R2 by R1 plus R2. So, equation this equation is for parallel combination. In parallel combination, directly equivalent resistance calculate kari pariba nahi. We can calculate the equivalent resistance by taking its reciprocal. आपको हमें reciprocal नवागो पड़ेगा. Reciprocal बने 1 by A. So reciprocal of A को 1 by A को हावो. Reciprocal of equivalent resistance is, so same formula, resistance जहाँ series रे similar formula. Only difference is here equivalent resistance by taking its reciprocal only. 1 by reciprocal. 1 by कल्ले इधर parallel रे आसबो. जस्ट सीरीज रे जो फार्मूला पैरेलल भी सेम फार्मूला ही अछि बट आर रेसिप्रोकल नै आइछ. ओके, रेसिप्रोकल काई नाडा आर रेजिस्टेंस डागो एंड ऑन एंड कनेक्ट है जी ऑल द ए कहिया गले ए जो पॉइंट डा दिस अ पॉइंट ए माने पॉइंट ए पी एंड अब देख म कलर को 200 जान करू एडा होछ पूरा पॉइंट पी एंड तळडा पूरा पॉइंट क्यू. सो the all the resistance are connected between point P and point Q. So its reciprocal is given by this. जो जेतो दिडा रेजिस्टर सीरीज रहइबो सेतो डायरेक्टली एडिशन करि पारे एबला. जेतो दिडा रेजिस्टर पैरेलल रहइबो इन दैट केस विल यूज R1 into R2 by R1 plus R2, right? Okay, so suppose for example there are two points like this. So resistance are connected like this. So these resistance are parallelly connected. These all resistance are connected in parallel. Suppose any type of combinations can be given here. Okay, so these are called your parallel connection. Jaha bhi current flow la from this point, current changes. All the currents are different value. Again, these currents are meeting here.
and it is same. So the total input current to the circuit is equal to total output of the current circuit. So these are the connections of series and parallel connection. In series, the voltage divides. So we can use voltage divider rule, VDR, voltage division rule by voltage divider rule. For simplification, I have taken only two resistors. Dita resistor neche. So total voltage V equal to divides into two voltage in R1, that is V1, and in R2 it is V2. So the total voltage capital V divides into V1 and V2. So here we will use voltage division or divider rule. V1 equal to total voltage V into that resistance R1 by total resistance R1 into R2. Similarly, V2 equal to total voltage V into same resistor R2, V2 R2 by total resistance R1 plus R2. Okay. If you look closely, this is not a separate formula. This is from your Ohm's law. Actually, it is a separate formula. No, properly देखो. I can write down V1 equal to as I into R1, right? Kaina V1 कहते ना direct current कहते flow resistance कहते, that is multiplied will give you voltage नहीं from your Ohm's law. So this is the same formula actually. A formula नहीं आसिबो. This is equal to I equal to कौन लिखिबा? I जगह में लिखिबा V by R equivalent काइना multiple resistors are there into R1 into R1. So this is equal to V by equivalent resistance for series connection is R1 plus R2 into R1 thila into R1. So this is the formula. So this formula and this one the same formula. So this formula and this is the same formula. So this is called a voltage division rule. Voltage division or divider rule. Not a different formula, but what a prakara derived formula. Voltage division rule. For example, we will do a simple problem. बहुत छोटा problem हम solution करीबा देखो. Suppose this is 20 voltage or 24 voltage suppose. So suppose this is 2 ohm and here this is 10 ohm suppose. So what is the V1 and V2? Easily we can find out. That is total voltage कहते 24 into resistance 2 by total resistance 10 plus 2 12. So 12 कटले कहते 2 2 2 into 4. So 4 voltage in R1, 4 voltage in R2. Voltage कितना से देखो in R2 the total voltage V into that resistance is 10 by total resistance 12. So 12 into 2, 2 into 10, 20. So total voltage divides 24 into 4 voltage and 20 voltage. We can also find out easily by using Ohm's law. That is, we know that V1 equal to I into R1, right? We don't know I value. So I value equal to total voltage by total resistance. Total resistance 10 plus 2, 12. So 12 by 24 by 12, 2 ampere. So 2 ampere. So here the current is 2 into resistance is 2, 2 to 4. Similarly, V2 equal to total to current 2 into resistance 10. So 2 into 10, 20 volt. Okay. I hope you have understood this. Similarly, in parallel circuit, the current divides. Suppose there are two resistance which are connected in parallel. Okay, connected in parallel with the total current. Total current I is divides into different current I1 and I2. I1 and I2. So this is a resistance value R1 into R2. So current division rule CDR or divider rule. Current division or divider rule.
the total current I divides into I1 and I2 in R1 and R2. So here is अगर हमें current division rule और divider rule easily हमें calculate करी पारिबा. So current division rule today देखो कौन हबो ना total current is I. So I1 equal to total current into opposite resistance R1. For I1 resistance is R1 and the opposite resistance is R2. So total current into opposite resistance by total resistance R1 plus R2. Similarly, I2 equal to total current in the circuit into opposite resistance. For R2 or for I2, the opposite resistance R1. So total current into opposite resistance divided by total resistance R1 plus R2. This R1 plus R2 is the total resistance, not the equivalent resistance for parallel connection. A R1 plus R2 equivalent resistance nuha. A resistance dida hochi kono. These two resistance are जो दिडा पाथ रे जो दिडा पाथ रे जो दिडा लाइन रे जो दिडा पाथ रे बा जो दिडा लाइन रे करंट डिवाइड ला जो ए लाइन जो दिडा लाइन रे करंट डिवाइड ला से दिडा लाइन रो रेजिस्टेंस ही एडिशन कराय छै. So this is not equivalent resistance. The equivalent resistance nuha. In parallel, the equivalent resistance will be R1 into R2 divided by R1 plus R2. This is the equivalent resistance. ठीक अछि. एटा होचे करंट डिवीजन रूल. फॉर सिंप्लिफिकेशन जदि गोटे छोट प्रॉब्लम हमें सॉल्यूशन करि पारिबा इजीली so that you will understood it clearly. Suppose having 10 ampere current or take different currents. Suppose there are 24 ampere current and resistance values are values for resistance are 4 ohm and 12 ohm. 4 ohm and 12 ohm. So मैं clear कर दूँ आदर कह so that you may not get confused. Here the total resistance value, total current equals suppose 24 ampere and R1 and R2 values are 4 ohm and 12 ohm. So find individual currents I1 and I2. Find individual currents I1 and I2. As per your current division rule, I1 equal to total current at 24 into opposite resistance 12 by total resistance 12 plus 4. So this is equal to 24 into 12 by bar 4 16. So 3 4 3 4 चौक 6 चौक 24 6 3 18. So 18 ampere. So जदि I1 18 ampere आसला, obviously I2 will be 24 minus 18 आसिया कथा. That is केते 6 volts. Sorry, 6 ampere. So I2 will be 6 ampere. Let's see whether it is 6 ampere or not. I2 can be found out the total current is 24 into opposite resistance. For I2, the opposite resistance is 4. That is R1 by R1 plus R2. R1 plus R2 bar plus 4 is 16. So it cancel kale 4 चौकु 4 6. So 6 ampere is the correct answer. So I1 is 18 ampere, I2 is 6 ampere. So this is your current division rule or current divider rule. This is all for your series and parallel connection. Okay, then circuit terminologies. What are the circuit terminologies? Very, very important. So obviously classes will be longer, long duration. So what is branch? Branch is any portion of a circuit with 2 terminals connected to it. A branch may consist
of more than one circuit element. For example, it have a circuit achi is a box go some elements like resistance, okay, inductor or capacitor kichhi bhi pariba, okay, resistor manar achi. So ame be कहबा branch कहबा did any two points भितर जदी two terminals भितर जदी connected अछि ame सेटा कहबा branch कहबा. So एटा गोटे branch देखि परिबो. Suppose एटा गोटे देखो point A and point B, it did a branches, did tinta branches. So देखि पारे एटा गोटे branch, this is branch number 2 and this one is a branch number 2, 3 branch. So these are branch, 3 branch, tinta branch एडी अछि. So branches may be any number of branches. Branch कौन ना दीटा point भितर गोटे element जदी अछि सेटा हम branch कहबा. So एडी देखि पारे ए दीटा point भितर point A और point B भितर मोर बहुत सारा एलिमेंट्स अछि. एडा गोटे एलिमेंट्स अछि. So this is a branch. एडा गोटे एलिमेंट अछि मझी रे, से that is elements branch, and एडा गोटे एलिमेंट अछि, एडा अछि गोटे branch. So these are your branch. Then what is node? Node होछि गोटे point बा junction को हमें node कहबा. So ए point रे एडा connect अछि, this connected, this is also connected. So such a type of point is called node or junction. Node बा junction हमें कहि पारे एडा. बुझियला. Nodes are very important parameter for circuit analysis. Circuit analysis में nodes and this loop is very important. Loop कौन now the closed circuit. It a closed circuit है पहला. This is a loop. Loop number 1. This is also a second loop. But a closed circuit. Closed circuit है that is called loop. Loop. But a closed circuit को loop कहते. So then Kirchhoff's current law. What is Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law?